Bismillahirrahmanirrahim. Today we will look at the text of paragraph number 3, more food and better food. इस पैराग्राफ में राइटर हमें ये बताना चाह रहा है कि कैसे हमारे खाने पीने की आदत भी तब्दील हो चुकी हैं साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल से। कैसे हम साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल के बाद आज के दौर में ज़्यादा और अच्छी खुराक हासिल कर सकते हैं। So now look at the text. Changes have taken place too in our eating habits. हमारे खाने पीने की आदत में भी तब्दीलियां आ चुकी हैं. Through the use of science, we have learned that it is healthful to eat many kinds of food. साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल से हम ये बात जान चुके हैं कि सेहत के लिए अच्छा है मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक खाना. And we have learned how to provide ourselves with a variety of food throughout the year. और हमने ये सीखा है कि हम अपने आप को किस तरह सारा साल मुख्तलिफ तरह की खुराक से खुद को मुहैया कर सकते हैं. People who lived a century ago, वो लोग जो एक सदी पहले जिया करते थे, रहा करते थे, probably enjoyed eating as much as we do today. वो भी शायद उतना ही खाना खाया करते थे, खाने से उतने ही लुत्फ़अंदोज़ होते थे जितना कि हम आज के दौर में होते हैं. बट दे कुड नॉट हैव एज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. लेकिन उनके पास खाने की इतनी तादाद में मुख्तलिफ चीज़ें नहीं होती थी. मोस्ट ऑफ देयर फूड्स हैड टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन देयर ओन फार्म्स. ज़्यादातर खाना जब वो खाते थे वो खुराक उनके अपने ही खेतों में अपने ही फार्म्स पर तैयार की जाती थी और देयर ओन गार्डन्स या फिर उनके अपने बागात में. सिंस फ्रेश वेजिटेबल्स कुड बी ऑब्टेन्ड ओनली ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, क्योंकि ताज़ा सब्जियां सिर्फ तब ही हासिल की जा सकती थीं जबकि उनके उगने का मौसम होता. पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट्स हैड नन ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स. तो वो लोग जो ठंडे माहौल में रहते हैं सर्दियों के महीनों के दौरान उनके पास ताज़ा सब्जियां नहीं होती थीं. Thrifty housewives preserved their home-grown vegetables and fruits by canning, pickling or drying them for use during the cold weather. किफ़ायतशार घरेलू ख़वातीन अपने घर की उगाई हुई सब्जियां और फल वगैरह नमक लगाकर या फिर खुश्क करके या फिर किसी तरह जमा कर महफूज कर लेती थीं जब मौसम काफ़ी ठंडा होता था. Meats were preserved by salting or drying or by freezing. इसी तरह गोश्त को महफूज रखा जाता था उसे नमक लगाकर या फिर उसे खुश्क करके या फिर उसको फ्रीज करके when the weather was cold enough, जब मौसम काफ़ी ठंडा होता था. Seafoods were generally available only along the coast. और समुद्री ग़िज़ा अमूमन साहिलों के साथ साथ ही पाई जाती थी. फिश एंड शेल फिश कुड बी ईटन सून आफ्टर दे वर कॉट. मछली और झींगा मछली वगैरह पकड़ने के फ़ौरन बाद ही खा ली जाती थी. रिगार्डलेस ऑफ वेयर पीपल लिव टुडे. इस बात से कतई नज़र के लोग आज कहाँ रहते हैं. दे कैन ऑब्टेन सम फ्रेश फ्रूट्स. वो ताज़ा सब्जियाँ हासिल कर सकते हैं. मीट्स गोश्त हासिल कर सकते हैं. एंड वेजिटेबल्स थ्रू आउट द ईयर. और ताज़ा सब्जियां और फल भी हासिल कर सकते हैं तमाम साल के दौरान. बाय द क्विक फ्रीज मेथड, जल्दी से मुंजमद करने वाले तरीक़ों के ज़रिए से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सी फूड्स एंड मीट ऑफ वेरियस काइंड्स कैन बी प्रिजर्व्ड सो दैट दे आर बोथ न्यूट्रिशियस एंड इंजॉयबल. सब्जियां, फल, समंदरी खुराक और मुख्तलिफ़ तरह की किस्म का गोश्त महफूज किया जा सकता है जो कि ग़िज़ाइयत से भी भरपूर होता है और मज़े से भी. Modern methods of selecting, grading and processing foods have removed the risk of or danger of poisoning them from canned food, dehydration or the removal of water from such foods as milk, eggs, potatoes and apples has proved a practical method of preservation. आज के जदीद दौर के जो तरीके हैं जिसके ज़रिए हम खुराक को चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं, मुंतखब करते हैं,
گریڈنگ کرتے ہیں، اس کی درجہ بندی کرتے ہیں، اینڈ پروسیسنگ اور خاص قسم کے عمل سے اس کو گزارتے ہیں، have removed the risk or danger of poisoning from canned foods. تو اس سارے طریقہ کار نے بند ڈبوں میں خوراک کے زہریلا ہونے کے خطرے کو ختم کر دیا ہے۔ ڈی ہائیڈریشن یا پھر پانی کو خشک کرنے کے عمل سے، اور دا ریموول آف واٹر یا پھر پانی کو نکالنے کے عمل کے ذریعے سچ فوڈز جیسا کہ اس طرح کے خوراک جیسا کہ دودھ، ایگز، انڈے، پوٹیٹوز، آلو اینڈ ایپلز اور سیب، انہوں نے پروو کیا ہے ایک پریکٹیکل میتھڈ آف پریزرویشن کہ یہ خوراک کو محفوظ کرنے کا ایک عملی طریقہ ہے۔ ان تمام طریقوں کے استعمال سے ہماری خوراک خراب نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک لمبے عرصے تک کے لیے محفوظ کی جا سکتی ہے۔ Our eating habits are not the only things in our lives changed by the use of science. ہمارے کھانے پینے کے عادات صرف وہ واحد چیز نہیں ہیں جو کہ سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے تبدیل ہو گئی ہے، because we have used science to learn more about the process، کیونکہ ہم نے سائنس کو استعمال کیا ہے زیادہ سے زیادہ جاننے کے لیے عوامل کو، طریقہ کار کو، اینڈ میٹیریلز اور اجزاء کو in our surroundings، اپنے ارد گرد، اینڈ about the methods of controlling them، اور سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے ہم نے ان کے اوپر قابو پانے کے طریقوں کو بھی سمجھ لیا ہے۔ We have been able to improve our ways of building houses، ہم نے اپنے گھروں کی تعمیر کو بہتر کرنے کے طریقے سیکھ لیے ہیں، بہتر بنا لیے ہیں۔ Our methods of communication and transportation، اپنے ذرائع مواصلات کو اور ذرائع نقل و حمل کو بہتر بنایا ہے۔ And even the way we spend our leisure time، اور حتیٰ کہ ہم نے اس وقت کو بھی بہتر بنایا ہے جب ہم فارغ ہوتے ہیں، یعنی اپنے فارغ وقت کے استعمال کو بھی ہم بہتر بنا چکے ہیں سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے۔